This factory produces more than 2 million footballs a year. And right before the World Cup, demand explodes all across Sialkot, a city in Pakistan that makes about 70% of the world's footballs. But only a small percentage of the roughly 1,000 factories here are FIFA certified, because they need to meet some of the toughest standards in sports manufacturing. For Bola Gema, that means serious precision at every step, all the way from molding rubber to dyeing the sheets, cutting up the panels, and finally stitching the ball. ये हर स्पेस के ऊपर जो है ना हमें स्किल रिक्वायर्ड होती हैं और स्किल्स के परफेक्शन के बगैर हम प्रॉपर बॉल नहीं बना सकते. We went inside one of the largest factories that's racing to meet global demand and cash in on football's biggest moment. Melting rubber is the first step of producing footballs at Bola Gema. ये मिक्सिंग मशीन है, इसके अंदर हम रॉ मटेरियल डालते हैं, फिर इसके रबड़ की फॉर्म में फीडिंग रूल बनते हैं जो आगे आता है. They cut the rubber sheets into the proper size and measure their thickness. After that, they leave them in a temperature-controlled room to set for 24 hours. Then the rubber is cut and shaped to form the bladder, which is the inner core of the ball. Workers inflate this and leave it in steam machines to solidify. One mistake here can ruin the entire ball, because the bladder determines the shape, bounce, and overall performance. That's why Mohammad Shakil Butt checks them at each step of the production process. अगर आपका ब्लेडर ठीक है तो आपका फुटबॉल ठीक है. अगर आपका ब्लेडर नहीं ठीक, आपका फुटबॉल नहीं है. The bladders for professional grade balls go through one more step. They're wrapped in strips of fabric and tightly wound with nylon thread to lock in the shape and size. The external layer of the ball is produced in another part of the factory, using massive machines that combine foam, fabric, and synthetic polymers. The new material is dyed into different colors. The entire bonding process is called lamination, and it makes the shell of the ball waterproof and rugged. लास्ट टाइम जो था हमारे पास लेमिनेशन प्लांट नहीं था, जिसकी वजह से हमें लेमिनेशन मटेरियल अपने वेंडर से खरीदना पड़ता था. अब हम वो लेमिनेशन प्लांट इन हाउस बना लिया और वो हम इन हाउस प्रोड्यूस करें. Workers cut those sheets into the panels that will eventually form the balls. Some of the designs are added in an old-school way, through screen printing. जहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स ज्यादा होते हैं वहाँ हम डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स कम होते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं क्योंकि वो फास्टर प्रोसेस है. Traditionally, footballs are made of 20 hexagons and 12 pentagons. Years ago, the factory would hand-stitch them together. उसके बाद स्टिचिंग भी एक आर्ट है. स्टिचिंग अगर आप प्रॉपर स्किल्ड बंदा स्टिच कर रहा है बॉल तो बॉल की राउंडनेस बहुत बेहतर होती है, और एक अनस्किल्ड बंदा या एक लेमैन अगर स्टिच करेगा तो वो फिर उसको बॉल को नहीं ओवल शेप का एक एग बना देगा. So, to scale up, Bola Gema started using sewing machines. These days, they produce at least 3 kinds of balls. First, there are these machine-stitched entry-level balls. They can make as many as 6,000 a day. आजकल पीक टाइम में अभी तो वर्ल्ड कप के टाइम पे हम तकरीबन अपने ओवर कैपेसिटी चल रहे होते हैं. हमें 2 शिफ्ट पे भी काम करना पड़ता है. Once the bladder is inserted, workers cinch it up by hand. बाइंडिंग के बाद ये यहाँ पे आता है, यहाँ लास्ट स्टिच लगता है फुटबॉल को, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम बॉन्ड कहते हैं. Then they've got the semi-professional balls. जो है मशीन स्टिच, लेकिन उसमें हम लोग फोम की कुशनिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस, उसका बाउंस, उसकी राउंडनेस बहुत बेहतर हो जाती है. वो सेमी प्रोफेशनल बॉल आ जाता है. The highest quality professional grade balls are joined together using a different technique called thermal bonding. And while it sounds complicated, the first few steps are all done simply by hand. First, workers line the edges of each panel with a super strong fabric glue. Piecing them together is like a puzzle. They refer to a diagram and join them. Next, the shell is placed in this machine where the panels are bonded with the bladder using heat. This process has been used to make World Cup balls since 2006.
Workers check the weight to make sure it meets the FIFA standard of 410 to 445 grams. To keep things fair, all balls should weigh the same. If they're too light, they could easily be pushed around by the wind. If they're too heavy, they would be difficult for players to control and could even hurt them. That's why Bola Gema has a lab where they run select samples through a series of performance tests. सैंपल जब रेडी होता है तो उसे हम टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ मशीनों पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटबॉल शूटिंग टेस्ट मशीन पड़ी है। The machine shoots a football at about 50 kilometers an hour up to 2,000 times to make sure it maintains its shape and stitching. ये जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं इनमें जो है ना क्वालिटी को साथ साथ देखा जाता है। अगर आप क्वालिटी को इधर भी कहीं भी स्किप करेंगे ना तो वो आगे जो है ना एक बड़ा सा जो है ना वो एक ब्लंडर बन जाएगा, एक बड़ी मिस्टेक सामने आ जाएगी। And the factory can't afford any mistakes because the next step is getting a 4-year license from FIFA. The initial cost for that is about $25,000. It includes advanced royalty fees paid to FIFA, but if Bola Gema sells more balls than expected, they have to pay an additional $2 per ball for the top quality models. Then there's a long list of other hidden costs too, like joining the World Federation of the Sporting Goods Industry. That's around a $1,900 annual fee. And buying mandatory insurance, that's another $1,800 a year. उस बॉल को खेलने से किसी को कोई डैमेज होता है, हाथ टूट जाता है, सर टूट जाता है, बॉल पाँव टूट जाता है तो प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी up to 5 million Swiss francs. Bola Gema also has to send samples for testing to one of FIFA's labs in the UK, Germany or Switzerland, which costs them $3,500. वहाँ पे बॉल भेजे जाते हैं, वहाँ पे बॉल पास होता है तो फिर हमें फीफा जो है वो अवार्ड करता है लाइसेंस नंबर। वो लाइसेंस नंबर हम बॉल पे लिखते हैं। अब ये बॉल जो है वो फीफा लाइसेंस बॉल कहलाता है और जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं, सॉकर टीम्स हैं, फेडरेशंस हैं, वो ये बॉल बाय करती हैं, कुछ क्लाइंट्स भी बाय करते हैं। And to keep that license active, the factory needs to conduct an independent audit every year, which costs them around $10,000. Still, that license can be revoked at any time if FIFA finds mistakes. They perform random quality checks on licensed balls by picking them up at retail stores and testing them. Being certified doesn't mean these balls are headed to the World Cup, but major brands and sponsors are now more likely to order from this factory. And that can transform the business. Bola Gema sells more than 1 million extra balls during a World Cup year. And with around half of FIFA's certified manufacturers located in Sialkot, the city is cashing in big time. The industry here dates back long before the World Cup. In the late 19th century, local artisans began making balls for British colonists, a skill rooted in Sialkot's long history of leather craftsmanship. हमारे पास पिछले 100 साल की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और वो इम्प्रूव कर रही है in terms of quality, in terms of materials, जो skills जो है वो हमारे generation to generation transfer हो रही है. Today, roughly 8% of the city's population works in football production. But the sport isn't very popular in Pakistan, even among folks who work at Bola Gema. तो हम भी देखने वालों में से ही हैं, खेलने वालों में से नहीं. मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा, बस क्रिकेट की हद तक ही जैसे पाकिस्तान के मेरे ख्याल 99% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो बैडमिंटन खेलता हूँ, वो भी फारग टाइम हो तो रात को जो है ना वो दोस्त के साथ जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वही बैडमिंटन खेलते हैं। Even badminton rackets are made in Sialkot, which is considered the sporting goods capital of the world. After the finishing touches, workers deflate the balls and pack them. None of their stock is sold in Pakistan. It's exported across Europe, the Middle East, and the US, where tariffs have made it hard to do business. बायर है वो स्पोर्ट्स बॉल के ऊपर 19% पे करना ये फील करते हैं कि ये अननेसेसिटी है, वो नेसेसिटी आइटम नहीं है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कम टैरिफ पे किया जाए। तो इस वजह से जो अमेरिकन मार्केट है वो तो बहुत इफेक्ट की है, वहाँ पे वॉल्यूम्स डाउन हुए हैं, सेल्स डाउन हुई है। The factory sells the lowest quality mini balls at a wholesale price of about $2 each, while the highest quality FIFA licensed balls go for around $25.
For Bola Gema, there's just a 10% profit margin. The real money is made later in the supply chain, when footballs like these sell at sports stores for a higher price tag of nearly $200. And with football still the world's most popular sport, Bola Gema doesn't see business slowing down anytime soon. तो एक लेगेसी लेके चल रही है प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जितनी भी हैं जिसकी के बेसिस के ऊपर हम क्वालिटी को जो ना वो मेंटेन रखते हैं. After laboring over each cut, stitch, and quality check, the team finds joy in seeing the final product. मेहनत के बाद आपने जब एक फुटबॉल तैयार किया होता है तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है उसमें, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है. बहुत अच्छा लगता है. हमारा तो होम ग्रोन प्रोडक्ट है, तो हमारा होम ग्रोन प्रोडक्ट जब पूरी दुनिया में खेला जाता है, पाकिस्तान का नाम आता है, तो हमें बहुत अच्छी उसमें फीलिंग आती है.